हाय गाइस, माय नेम इज़ श्रेया दास एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है रिक्रिएशनल सॉर्ट ऑफ अ वीडियो। मैं पिंटरेस्ट से स्क्रॉल कर रही थी एंड आई फाउंड दिस ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ हिना खान। उनका मेकअप लुक इस वीडियो में बहुत सुंदर लग रहा है। ये स्पेशल ओकेजन्स के लिए ये मेकअप लुक आप रिक्रिएट कर सकते हो एंड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन लाइक मेकअप बट आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट कि जितना हो सके क्लोज इनफ आई एम गोना रिक्रिएट हर लुक. And if you're interested in watching such kind of a video, then continue watching, and without any further ado, let's jump right into this video. Okay, I'm gonna pull you guys closer so you guys can have a better look at my face, and I'm gonna tie my hair as well. Okay, I have a clean face right here. Skin care वगैरह मैंने कर लिया है. We are gonna start up by using a primer. ये मैं Lakme का Blur Perfect Primer यूज़ कर रही हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर आइज़ फर्स्ट. मैंने एक साइड के आइज़ में ऑलरेडी कर लिया है ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए एंड मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ. लेट्स जस्ट स्टार्ट बाय अप्लाइंग अ कंसीलर ऑन द आईलिड्स ताकि एक क्लियर और इवन बेस मिल जाए हम लोग को. I'm gonna apply, मैं स्विस ब्यूटी का अप्लाई कर रही हूँ एंड माई शेड इज़ 03 एंड विद द हेल्प ऑफ अ kabuki ब्रश I'm gonna blend it. Okay, now I'm gonna take this colorful eyeshadow palette. This is from Hill Rhoda, and I'm gonna take a eyeshadow blending brush, fluffy eyeshadow blending brush, and with the help of that I'm gonna take this shade right here and अपने crease पे और eyelid पे evenly apply कर लूँगी. I'm taking this Lakme का iconic काजल एंड अपने आईलिड पे ऐसे रफली अप्लाई करूँगी एंड उसको अपने फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी. आपको अगेन प्रिसाइसली कुछ भी नहीं करना है, बस फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर लेना है. अगर आप चाहो तो आप फ्लैट आई शेडो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो ब्लेंड करने के लिए. आपको जिसमें कंफर्टेबल है आप उससे करो. Then repeat this step until we get the desired, intensity and the color payoff. अभी हम लोग को काजल लेके अपने अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन दोनों में काजल अप्लाई कर लेना है. टेल यू गाइज अ सिंपल ट्रिक. इस काजल को अपने एंड आई के एंड पे रखना है, आईज क्लोज एंड वी मूव इट लाइक दिस एंड वी आर डन अप्लाई. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज़ टेक योर काजल एंड बहुत ही थिन सा लाइन बनाना है आपके अपर वाटर लाइन से स्टिक करके. Okay, now you have to take a black eyeshadow. I'm taking this palette right here. This is from SFR Colors and इसका black shade लेके and with the help of this blending eyeshadow blending brush I'm gonna blend the liner very light-handedly. Basically अपनी eyelid पे थोड़ा सा black eyeshadow और deposit कर रहे हो. Okay, so we are done with our eyes. मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा टचिंग एंड फिनिशिंग टचेस हम लोग लास्ट एंडिंग में देंगे. बट नाउ लेट्स जस्ट मूव विद आवर बेस मेकअप. मैंने यूज़ दिस सीसी क्रीम फ्रॉम लैक्मे. आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो बट आई डोंट वांट माय फेस टू लुक लाइक केकी, सो मैं यूजुअली फाउंडेशन नहीं अप्लाई करती हूँ, या तो बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम ही अप्लाई करती हूँ. सो आई एम गोना यूज़ दिस वन राइट हियर. दिस इज़ लैक्मे 925 सीसी क्रीम. आई एम इन द शेड 03 ब्रॉन्ज. And don't forget to apply it on your neck as well. I'm gonna blend it all using this flat kabuki brush. I'm gonna apply concealer. I have this one again from Swiss Beauty. I am in the shade 03. I'm gonna apply it under my eyes and all the other spots where I feel it necessary.
Her face does not have any sort of a blush, but she definitely has her face shaped. I think she might have used a bronzer, so I'm gonna use this one right here. This is not like a bronzer but a concealer which I have in a darker shade. Okay, so now when we are done with all the liquid products, I'm gonna start powdering my face because of all the oil that I have. I really have very oily skin, so I'm gonna use a loose powder. You can even use a compact powder as well. I'm using this one from Lakme. This is the Lakme Rose powder. We're gonna do our brows. To be honest, I am really bad at doing my brows. I usually just make some light strokes and call it done with my brows. I usually don't experiment, but I think for her brows it's kind of a bushy, so I'm gonna try and do the same thing with my brows and hopefully it turns out good. I'm really bad at it, so no tutorials for that. Now we are gonna do our eyelashes. She doesn't have any eyelashes on, so I'm gonna apply a mascara. She although has a very matte makeup look, but I can see highlights on her high points of her face, so I'm gonna do the same, for which I'm gonna take this face palette. This is from Faces Canada, and I'm gonna take the highlighter shade, and with the help of my fingers only I'm gonna apply it. For her lips, she has a nude lipstick on, and I think I have a shade quite similar to hers. This is from Lakme Cushion Matte Lipstick, shade CP5, which I think should be very similar to what she has applied. I'm gonna apply it with the help of a brush. सो लिपस्टिक ऐसी कुछ ऐसी लग रही है मेरे फेस पे. सिमिलर शेड तो एकदम नहीं मिला मुझे, बट विथ व्हाट आई हैव एंड आई ओन ये भी अच्छी ही लग रही है इस लुक के साथ. आउटफिट शी इज़ वेयरिंग लाइक अ वाइट शर्ट, a transparent one kind of, which I have right here, and I'm gonna pair it up with this choker. Again, it's from a local market, and we don't have something similar what she's wearing like a dupatta and a thing, but we definitely have this red sort of a dupatta which I think should go well. I'm gonna wear the whole outfit and just be right back. Okay, and with that we have come to an end to today's video. I hope you guys enjoyed watching. I know the look is not exactly similar to what she's carrying and the way she's carrying, but I think I tried my best to recreate in a way which was possible for me. So make sure that you like, share and subscribe. I'll see you in my next video. Until then, bye.